वैसे ट्रेस क्या होता है? No idea? Diagonal entries का sum. Very good. Okay. So how would you basically, let's say you have a matrix A as entries A11, A12. So your trace would simply be the sum of the diagonals K11 plus. Right? Make sense? Now I want to write that in this form for an arbitrary matrix. Right? So trace of P would be written as whatever you have, the ith entry, right? Because it's going to be a diagonal. Okay. So now I can rewrite this as, and let me explain this why. You guys get what I've done here? So split into two summations. Yeah. So just makes multiplication. Yeah. So the idea is precisely that, because I have two matrices, right? So I've just expanded that definition. And if you want to see that in a more explicit manner, you can just imagine this thing. 1, 2, 1. Always simplify things. So B11, B12, B21, B22. So this is, let's say, equal to AB, which is, I'm going to call it C, C11, C12. So what is this entry equal to, and what is this entry equal to? A11B. Yeah, so this thing into this thing, and this thing into this thing. The last entry, right? Which is exactly this thing over here, right? Make sense? Okay. Alright, so now, these are just entries. These are, what are these? These are numbers, right? Numbers. So I can always swap them. Okay. And it's my choice. I can do the J summation first or my I summation first. So the idea is that the better thing would have been to do this. I mean, it's equivalent, but still I'm introducing matrix multiplication afterwards. So, and I can swap the orders. So these become BJI, AIJ. Well, what is this equal to? Trace BA. Yes. So this is just equal to J BA II. Sorry, JJ. Okay. Is that clear? Trace of A plus B is equals to trace of A plus trace of B. Very easy to see. Can you guys do it using the definition? What was the question? Trace of A plus B. Trace of A plus trace of B. Let me see if the door is still open.
Yeah. So can you guys do this? Using definition. Pretty straightforward. It's gonna get distributed, the I thing is gonna get distributed. Yeah. Right, so it's gonna be here and here, Mm. and then simple, right? Okay. Now let's do another problem. Likewise, if you have a scalar multiplying, right? You can always take that outside. So now let's do this. You have to show this. You have an outer product, and you take the trace of that outer product, you get an inner product. How would you go about it? You again apply the definition of the trace. Yeah. So what would that definition now be? Another way to write it, because now it's expressed in the outer product form, I'm going to use the ket notation. So now is that clear? No? It's the definition of the trace. It's the same thing, sum of the diagonal entries. So you have this thing over here, right? And what is this? This, and this. In the bases where you've expressed the matrix in these bases, right? So these are just this entry corresponds to some EI, likewise EI, and so forth. Does that make sense now? Because the basis vectors are, so just like, for example, if it was E2, then it would be 0, 1, then 0 is all the way down. So you have basically this matrix elements has entries, right? So like I, and so forth. Obviously, this matrix has to be represented in a particular basis. Whenever you write a matrix, right, you're representing it in a particular basis. Likewise, a vector, right? So given that you have these bases, right, you will be composing the matrix elements or the expectation with respect to these bases. The other way to think about it, it's just the definition of the trace in the ket form. Have any questions? I'm just working through it. Okay. So now, and by the way, when I wrote that thing over here, something like this, right? I didn't specify it because I didn't need to specify it, right? But here, it's implicit. Here it's made explicit. It's just the diagonal entries. Yeah. But still, in the basis, right? It's like, whenever you tell me, okay, I have to write a matrix, right? Then I have to tell you, or you have to tell me that the basis in which you want me to write that representation, right? So, in that way. Okay. Okay, so I have this.
Okay, these are just numbers. I can swap them around. Do you guys see where I am going with this? Yeah. So W, sorry, V, EI. I swap these two numbers around. EI. This is equal to, this is identity I get. Okay, makes sense. Okay. Okay. Show that the tensor product and by the way, here's an exercise for you guys to do. Do this at home, and tomorrow I'm going to use this property in another question. So आप ये लिख लो बेशक ये आप कल कर आना ठीक है जब आप ये करोगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ठीक हो गया show that tensor product of two unitary operators is unitary. Okay, so let U V be unitary. What it's saying is that U cross V, U cross V dagger. So this would be the same as what? No. Okay, yeah, sure. So U cross V into this. How do I do this? First of all, okay, I want you to assume a couple of things. One is called the mixed product identity. AC tensor B. No, sorry. Yeah. BD. I mean, you guys know this already. Yeah. Okay, good. So the other thing I want you to assume is following: U cross V dagger is the same as U dagger, V dagger. Likewise, star. Likewise, third thing I'm assuming transpose. So dagger, transpose, and complex conjugate all distribute. I'm going to write it as like a set: dagger, star, and transpose distribute in the following fashion. I hope my notation is clear. I'm going to write it again. Yeah? I'm just saying that star, complex conjugation, transpose, and adjoint all distribute over the product as such. Okay. Yeah. So the for sure. So आगे क्या करेंगे?
if you guys want to have like a look at the questions here, these are it. So how should I go about this? I mean, if you distribute the dagger inside Okay. and then you apply So the you word. So you V, you dagger, V dagger. then that becomes U dagger tensor V dagger. Okay, good. And is that just identity? Tensor identity. Yes. By the way, you also have to show that U cross V dagger and U cross V, right? So this is, let's say, A into B. Yeah. Like this is the opposite. And the reason we want to show that, I mean, again, exactly the same scheme is going to follow, Yeah. right? But I'm going to give you a question where it'll help you understand. They're not like, in this case, they commute, but they don't necessarily commute. So, where is the question? Yeah. Calculate the matrix representation of tensor products of polyoperator identity and X and identity. So calculate XI and I matrix representation. ये आप लोग कर दो जल्दी से. X tensor identity and the other way around. Yeah. Okay. Both of these. But obviously this is basically the cross, right? The full matrix forms. Yeah. Okay. What would be the dimension of the matrix? 4x4. Okay. But are these equal to each other? No. No, right? Well, that's what it is. I mean, it's identity, right? Still. Which the reason is because one belongs to some other vector space and the other. Anyway. One more thing. If you guys had a problem with this thing, I just realized one thing. What is this equal to? By definition, ये क्या चीज होती है? Element of a matrix I through J equals. Very good. So how do you write it? A some basis J, right? And now you're restricting. So ये तो हर एक इसके लिए सारे के सारे entries, right? If you want to restrict to just diagonal entries, you make this equal to I. Okay. And now you want to sum them, you sum them. Okay. Make sense? Yeah. It's like a more elegant way to think about it.
So where was I? So we have to also do this, right? But it's the same recipe that you guys can do that. कितने लॉर्ड? ओके, टू हर्मिशन ऑपरेटर्स का भी टेंसर प्रोडक्ट हर्मिशन होता है, करते सिंपल है ये। मैं ज़रा आगे जाना चाह रहा हूँ। जल्दी से करें ये। Tensor to Hermitian इज हर्मिशन। Again, it's a one-liner proof. आगे चलते हैं। Entangled state की definition क्या होती है? ऐसा प्रोडक्ट स्टेट से लिखा जा सकता Good. So आप शो कर दें कि ये जो state है ना, ये entangled है. In other words, cannot be written as a tensor product. Show that the bell state psi equals 1 by square root. आपने एक स्टेट के लिए किया था ना, आई थिंक इसकी माइनस वाली स्टेट के लिए किया था। is entangled है ना, माइनस वाली के लिए किया था। और एक बात जो इसमें सर ने कराते हुए आई थिंक बोला भी था कि हमेशा आप क्या रेसिपी यूज करेंगे इस तरह की चीज के लिए, व्हाट वुड बी द प्रूफ बाय। प्रोडक्ट हाँ हाँ हाँ, बट उसका एक वेरी सिंपल जो आपको एग्जाम के लिए भी याद होना चाहिए कि हाउ वुड यू अप्रोच दिस। आई गेट इट दैट यू वांट टू शो दैट, हाउ वुड यू शो दैट। The first thing, there are multiple types of proofs, right? So here, which type of proofs should you be using? Proof by contradiction. अगर मतलब आ जाए फॉर एग्जाम्पल तो आप उसको कर सकते हैं। अब आप वो देख के बता दें क्या कॉन्ट्रडिक्शन। आप लोग अपना करो, मैं कर रहा हूँ।
जी इसमें हम डिटर्मिनेंट नहीं देंगे और इक्वल वो अगर नॉन जीरो है तो फिर वन टाइम I don't know about that. मैं जो जिस तरह से कर रहा हूँ I don't know what you're talking about. Maybe that's correct. But the way I'm showing it is very simple. कि मैं by contradiction I'm gonna just take two states, right? And I'm gonna say that okay, maybe this equals my entangled state. So it is basically separable, right? And from those I just compare the coefficients. And coefficient से मुझे ये पता चलेगा कि अल्फा और सिग्मा जो है वो ज़ीरो होना चाहिए इनका प्रोडक्ट, इसका मतलब अल्फा भी ज़ीरो हो सकता है और सिग्मा भी ज़ीरो हो सकता है, राइट? और दोनों ज़ीरो हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं अल्फा को ज़ीरो करता हूँ तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाती है। लाइकवाइज अगर मैं सिग्मा को ज़ीरो करता हूँ तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाती है। और क्योंकि यहाँ पे बीटा और गैमा भी पड़े हुए हैं, सो आई मीन देयर इज़ नो वे फॉर if you take any one of these to be zero, right, or at least two of these to be zero, you get these because ये products हैं. Make sense? So basically, क्लास में सर ने इस तरह से कराया था या डिफरेंट तरीके से कराया था? Sir told us that if the determinant of our if the determinant of A is non-zero, then our state is not entangled. Or I think that's it. It was a recipe, I think. I think it ends up A being similar to recipe. this because the coefficients end up they end up like this. But I guess in this I don't know where I get the 1 over root 2 factor from. From here. No, I'm just in the determinant वाली thing. Okay. वो आप देख लीजिए. If you have an issue, you can take this here as well. यहाँ पे भी आप normalization constant adjust कर सकते हैं. Okay. अच्छा, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं. Show that the average value of an observable x1 was e1 for a 2-qubit system made in the state this is 0. For a 2-qubit system in the state वही कैसे करेंगे? जी ऑपरेटर को सैंडविच करने के लिए उसको मसाए कहते हैं. ये पहले पे लगेगा ये दूसरे पे लगेगा. ठीक है, करा दूं या आगे चले? पहले पे नहीं है. ओके हाँ ठीक है. राइट, इस पे लगेगा और इस पे लगेगा. एक कर देता हूँ, दूसरी साइड में पूछे x क्रॉस z है ना बेसिकली. So if I take it's actually inside, so just be x times this answered with c times 0 plus 1.
ठीक है, ये क्या करेगा? वो flip it becomes cat 1 हाँ, और ये stays cat 0. So 1 0 no 1 0 plus uh, 0 minus 0 1. right? Yep. ठीक हो गया। और फिर इसको आप हिट कर दोगे अगेन साई के ब्रा से, तो वो 0 आ जाएगा, Okay. राइट? क्योंकि ये आपको 0 दे देगा, ये आपको 1 देगा, लेकिन ये आपको 0 दे देगा। लाइकवाइज ये ये मजा क्या? सी नॉट्स पढ़ लिया है ना? Yes. Show that surrounding a C naught, but I'm just going to write that down anyway. This was the problem sheet. What? This question's in the problem sheet as well. Kind of. Basically, they asked for the truth table Okay. of exactly this. So usme implicitly end up showing that as well. Okay. It's the phase kick operator or something, right? Control Z. Yeah, I think it makes the second bit the control bit. Yeah. It is. दोनों टारगेट को फ्लिप कर देते हाँ Yeah, हाँ हाँ yeah. बिल्कुल। अच्छा, ये कर लिया होगा आप लोगों ने? I mean, हैं। हाँ, प्रॉब्लम सेट के अंदर है। हाँ, प्रॉब्लम सेट के अंदर है, तो मैं कराऊँ या ना कराऊँ ये बताओ। I've done it. आता है? चलिए अगले आगे चलते हैं। Suppose that we have this state this तो ये कर लेते हैं। Suppose we have this state इसका ना एक बहुत मेजर पार्ट है कोडिंग का, तो आपका मिड हो जाए उसके बाद फिर हम कोलैब के थ्रू लाइक आई कंडक्ट दैट, ताकि आपको एक आइडिया हो कि एक तो ये कि हम उसको प्रॉपर कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट मैं तो करूँगा कि उसको क्वांटम, आप लोगों को ये पता हो कि क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर अगर आप एक क्वेरी दे रहे हो तो हाउ डज दैट वर्क। सो आपने ये, क्योंकि it's supposed to have some coding involved in at least, हाँ मतलब कुछ ना कुछ तो आइडिया होना चाहिए, वो भी करेंगे हम anyway. Okay. अच्छा phi और जो psi है ना वो unnormalized है, ठीक है, बट उनके जो qubits हैं so with the same number of qubits, तो इसमें वो उतने ठीक। Okay, suppose we apply Hadamard gate to the first
तेरे को? From one as a function of phi z. जी भाई. वन का मतलब get वन ना. Yes. अच्छा तो the Hadamard would turn the, obviously you apply that to ket 0 and ket 1, so that turns into plus and minus, and then I guess we have to expand plus and minus back into their Computation. ket 0, ket 1 representations, or their expectation value, I guess. Let's go just take the inner product and So ignore it. अगर हम पहला काम क्या करेंगे, Hadamard apply करना है. Hadamard हाँ. कैसे apply करेंगे? Onto the first cubic. Hadamard tensor identity. मैं ना आसानी के लिए फाइल डाल रहा हूँ, मतलब आप लोगों को पता है, राइट? Alright, so it applies here. What do you get? Ket plus. Plus. So ket plus होता क्या है? 1 over root 2 ket 0 plus ket 1. So 1 over root 2 और 1 over root 2 आ जाएगा इधर. So 1 over 2 हो गया. 0 phi plus 1 phi. ठीक है? Plus again 0 psi minus 1 psi. सही है? ठीक हो गया. अच्छा, अब आगे क्या करना है? Remember that first qubit in the computational basis. सबसे पहला मैं काम ये करते हैं कि zeros को एक जगह कर लेते हैं, fives को एक जगह पे कर लेते हैं. Just rearranging that, right? That is just 0. इससे और इससे 0 आ गया, ठीक है, और टेंसर्ड, so this was tensored with this, so this is this term plus 0 with psi this term. Yeah. Right? Okay, likewise for 1. So 1 tensored with phi would give me this. 1 tensored with psi would give me minus with this. सही है? अब क्या करना है? Expectation of the state. So inner product when we take them out squared. क्या आएगा? इसके साथ करेंगे ना? So whatever. Okay, so go back to the question again. Give the probability of obtaining the outcome 1 as a function of
phi and psi. Hmm. It's sort of treating them as coefficients or something like that, right? It's a function of that. So आपके पास ये psi है, ठीक है? The rest of the thing, this and 1 over square root 2, that is going to be your amplitude, right? Can you see that again? So आपका पहला क्यूबिट 1 है, ठीक है? ठीक है. बाकी पूरी पूरी चीज जो है वो टेंसर हो रही है. हाँ. And it's asking you to obtain the outcome as a function of phi and psi. So whatever you have with that, with 1, it's going to be your probability amplitude. Okay, so just 1 by 2. No, 1 by 2 No. and this thing over here. Okay, yeah. Yeah? Huh. Okay. And then obviously the mod square of it. Yeah. इसको फिर आप expand कर सकते हो real और imaginary में let me verify. Yes, this is precisely correct. ठीक है. जो लिखा हुआ है कि अननॉर्मलाइज्ड है, हम्म. इसकी क्यों इम्प्लीकेशन है क्वेश्चन के हाँ. सॉल्यूशन पे? हाँ, मतलब इसका ये मतलब है कि जब आप ये काम कर रहे हैं तो जो फाई और साई है इनकी जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स हैं उनके जब आप मॉड स्क्वायर करते हो तो दे डू नॉट ऐड अप टू 1, सो यू हैव टू स्केल देम इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट दे आर नॉर्मलाइज्ड. लाइक जो करेक्ट आंसर होगा, राइट, जहाँ पे आपके प्रोबेबिलिटीज ऐड अप करती हैं 1 पे, वो यहाँ पे नहीं हो रहा होगा क्योंकि बोथ स्टेट्स आर नॉर्मलाइज्ड. ओके, मेक सेंस? And we discarded the ket 0 thing entirely. That Yeah, left because side. I have, क्योंकि मैंने 1 की कंप्यूट करनी है ना प्रोबेबिलिटी, तो yes. वही काम किया जो आप कह रहे Oh, थे. हाँ ठीक है, because हाँ ठीक है 10, I guess that'll hit that and become 0. Yeah. So हाँ ठीक है, okay. Yeah. got it. बस 2 सवाल रह गए हैं बस. Are you guys happy with the pace? You said the pace तो नहीं कोई 4. Serious pace? हाँ, pace तो नहीं काफ़ी जा रहा है. I think it felt like that a lot in the start. Lekin kind of getting used to it now. Oh yeah. I think it just requires some revision after class because it's hard to grasp a lot of things as he's going through them, especially if you're trying to take notes alongside it. Yeah. So, but yeah, I think it's okay. It is obviously faster than we're used to, but I think not too bad. Yeah. आगे चलते हैं. ये होता है 2 outcome projective measurement. And 2 qubit space that measures parity.
Okay जी. To outcome projective measurement on a 2-qubit space that measures the parity, which is the sum modulo 2 of a 2-bit basis state, also give the corresponding observable. So आपने एक measurement operator construct करना है, ठीक है, जो कि क्या होगा, जो जब act करे तो आपको अपनी उस state की parity बता दे, right? Even है या odd है, ठीक हो गया? So आपका जो parity operator होगा even का, वो क्या होगा for a 2-qubit state. ये बात समझ आई है ना पहले वाली जो मैंने कहा है? So it would basically जो आपका operator होगा, it would be simply like something like V odd some number, maybe अगर मैं प्लस कर देता हूँ तो प्रॉब्लम है क्योंकि P even क्या आइडेंटिटी बन जाता है और मुझे पता है कि ये नेगेटिव है. But the idea is some combination of these two, right? This is what you want to construct. Question से जो correctly लग रहा है, ठीक है? अच्छा तो P even क्या होगा? So we check if the bit is even, so 1. Okay, good. So that would be 0 0 cross 0 0. ये act करेगा ना state के ऊपर, Yeah. right? जब state के ऊपर let's say 0 0 पे act करता है तो उसकी parity even है, right? Likewise जो add होकर 2 दे रहा होगा, modulo 2 है ना, sum modulo 2, दूसरा क्या होगा? इस ये ऑपरेटर ने एक्ट करना है आपकी बेसिस के ऊपर. बेसिस स्टेट्स क्या होंगी आपकी? 0 0 0 1 1 0 1. ये आपकी इवन वाली है या ऑड वाली? Even are which ones? The left ones? These 0 0 0 1. 0 0 sum modulo ना. Oh, okay. ठीक. So you can imagine is कि arbitrary अगर ये है, what it's saying is this कि इनके दरमियान में ये जो है नंबर्स हैं, right? जो आप कैट के अंदर लिख रहे हो, ये sum modular 2. Okay. Which is why ये और ये आपका even parity है और ये odd parity. So odd parity gives you 1, even gives you 0. Yeah. Okay. By definition मतलब even parity और odd parity होती क्या है? I guess based on this, even parity is 0, odd parity is 1. Okay. अच्छा एक ये हो गया, दूसरा क्या होगा? P odd. Zero 1 0 1 0 1 1 0 plus 0 1 नहीं है. you're right, thank you, plus 1 0 और ठीक है. अच्छा जी, मैं एग्जैक्टली वो नॉर्मलाइज स्टेट लिख लूँ. अच्छा अब ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स हैं. अगर ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स हैं तो इनकी ख़ास बात क्या है? ये हर्मिशन है, p square is equals to p. You can show those easily, right? नज़र भी आ रहा है, ठीक है? Okay. The other is
मैं spectral decomposition यूज़ कर सकता हूँ, right? Because I want to construct this M. Okay, तो अच्छा, और मुझे एक को आइगन वैल्यू प्लस देनी होगी और एक को आइगन वैल्यू माइनस देनी होगी, तो मैं इवन को प्लस दे देता हूँ और ऑड को नेगेटिव दे देता हूँ. So this would simply turn out to be और नोट करें ये जो है हमेशा आप ये तो काम कर ही सकते हो, सारे प्रोजेक्टर्स को अगर आप सम अप करते हो तो वो आपका आइडेंटिटी होता है, राइट? तो ये आपका प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट हुआ जाएगा जहाँ पे मैंने साइन प्लस 2 प्लस आइगन वैल्यू even and negative eigenvalue to odd. Spectral decomposition सिर्फ normal operator की इस्तेमाल एक तो हर्मेशन जो होता है ऑपरेटर, और ये मेजरमेंट ऑपरेटर है फर्स्ट ऑफ ऑल. measurement operator नहीं, ये तो प्रोजेक्शंस है ना, जी जी ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स हैं, मैंने तो इसके लिए यूज की. अब आप चेक कर सकते हो बाय द वे कि ये जब एक्ट करेगा इन सब के ऊपर तो आपको क्या देगा. सो अगर ये एक्ट करता है मेजरमेंट ऑपरेटर, आप बताओ वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि आपका सही आंसर आया है. ऑड और इवन के लिए तो अगर मेरे पास स्टेट है m अब एक्ट करे अगर 0 0 पे, तो आई शुड गेट अ प्लस आइगन वैल्यू because it's an even state. Yeah. Well, do I get a plus value here? Well, yes, because p even minus p odd है. p odd तो check कर लेते हैं, a 0 0 0 सिर्फ ये लगेगा, I get plus. Likewise, जब अगर मैं इसको 0 1 कर देता हूँ, और जब 0 1 होगा तो ये एक्ट करेगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, राइट? बट यहाँ पे नेगेटिव साइन है ऑलरेडी, राइट? सो नेगेटिव आइगन वैल्यू आएगी यहाँ पे. ये बात समझ आई नहीं? नेगेटिव इनटू दिस थिंग, तो वो 0 1 को माइनस और साथ में 0 1 दे देगी. लाइकवाइज फॉर द अदर केसेस. दैट्स लास्ट क्वेश्चन. बाय द वे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, शो कर लेना, बट आई मीन हमें ज़रूरत नहीं है. स्टिल सारे जीरोस हैं बाकी दिस थिंग. ओके, सपोज करें कि अगर एलेक्स और बॉब के क्यूबिट्स जो हैं वो आपस में इंटैंगल्ड नहीं हैं, ठीक है? और इफ एलिस सेंड्स अ क्यूबिट टू, क्योंकि ये लंबी स्टेटमेंट है तो आई डोंट वांट टू राइट इट, hence I am explaining it. If Alice sends a qubit to Bob, this gives Bob at most one bit of information about Alice, right? अगर वो एक क्यूबिट भेजती है जो वो मेजर करेगा तो उसको जो इन्फॉर्मेशन है वो 1 बिट की ही रिसीव होगी. However, if they share a Bell state, psi कोई भी हो सकती है,
they can transmit 2 classical bits by syncing 1 qubit. If they share a Bell state, so what it's saying is that they can transmit 2 classical bits by sharing just 1 bit, right? By sending 1 qubit. This is okay, ये मैं बाद में बताऊंगा. अच्छा, अब स्टार्ट क्या करना है वो बता देते हैं. Start with the shared Bell state. अच्छा, और एलिस के पास सो आइडिया ये है कि अगर वो एक बेल स्टेट शेयर कर रहे हैं आपस में एंड जो एंटेंगल्ड है, ठीक है, तो वो 2 क्लासिकल बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाय सेंडिंग जस्ट 1 क्यूबिट कैसे भेज सकते हैं, ठीक है, ये हम जानना चाह रहे हैं. तो उसके लिए हम आगे चलते हैं. तो सपोज दिस इज फॉर एलिस के पास, एलिस हैज 2 classical bits A and B, A and B bit, ठीक है, ये 2 क्लासिकल बिट्स हैं. Okay, so the recipe is she applies. So अब एक उन दोनों के पास एक बेल स्टेट पड़ी हुई है जो कि शेयर हो रही है, ठीक है, और वो ये काम करेगी. An X gate to her half of the pair. तो हम 1 सपोज कर लेते हैं. If A equals 1, सही है, okay, followed by Z if B equals 1. और राइट ये आप लोगों ने करके बताना है. रिजल्टिंग 2 qubit state for all four possible values. So AB क्या क्या हो सकता है? 0 0 0 1 1 0 1 1. ठीक है, ओके. तो क्या होता है, क्या उसने बताया, क्या करेंगे आप लोग बताएं. If A equals 1, then she applies an X gate. ओके, And then if B equals 1, she और applies. ये आपने साई पे लगाना है, राइट, जो आप शेयर कर रहे हो बस. Yeah. और दिस इज फर्स्ट हाफ ऑफ, मतलब हम ये से शुरू कर रहे हैं पहले वाला. Okay. ओके, सो व्हाट इज दिस? So do we just go, I guess, case by case? Sure. So if AB is equals to 0, then nothing changes. Yes. So you get again the state back, Yeah. which is 1 over square root of 2. 0 0 plus 1 1. So identity basically, right? What Um, about 0 1? So she's going to apply Z gate then. So So Z is gonna get acted on Z cross identity, right? It's gonna get acted on this state 1 over square root of 2. it just changes the sign. Good. So 1 over square root of 2 0 0 minus 1 1.
Okay, what about this? X gate, so 1 flips. 0. So it'll be 1 over 2 ket 1 0 plus ket 0 1. This thing, right? 1 over square root of 2. So this is acting on this thing, right? This thing. So 0 gets 1 and 1 gets 0. So 1 over square root of 2, 1, 0, and 0, 1. Alright, and what about the fourth case? So X When- and Z. So 1, 1 के लिए क्या होगा? so will this be I guess X tensor identity followed by Z tensor identity, or is it X tensor Z? ये आप लोग बताएं. अगर आप It's not gonna be X tensor Z because that's the देखो वो अपने पे ही लगा yeah, सकती so है, X right? identity followed by Z tensor identity. Or simply just so पहले वो क्या कर रही है? X Z. X, X Z tensor ये है? identity. Yeah, ZX. right? ZX, that's it, cross identity, Yeah. right? Again इस पे लगेगा, क्या दे देगा? जब X लगा, X ने क्या किया? Flip. One zero plus 0 1. फिर जब Z लगेगा तो इसको माइनस कर दे, इसको माइनस कर देगा. So इसको 0 मैं 1 लिखूंगा. minus 1 0. Yes. So this would be just 1 over square root of 2. 0 1 मैं इधर ही लिख लेता हूँ. Minus 1 0. अब इनके बारे में कुछ खास बात. 1, 2, 3, and 4. These are the 4 mutually orthogonal Bell states, right? और इसको मैं क्या देता हूँ 5 plus. Oh, I'm behind. नाम सही होने चाहिए. फर्क नहीं पड़ता, but I'm just doing it. 0 0 के साथ 5. हाँ ठीक है. 5 plus pi negative psi plus and sin. And sin. अच्छा, अगला part क्या? Alice sends her half of the state to Bob, who now holds 2 qubits. ठीक है? Show that Bob can determine both a. So अब the idea is कि अब आपने क्या करना है? आपने qubit entangled था, ठीक है? और Alice के पास 2 classical bits थे A और B, right? अब उसने उसके ऊपर स्पेसिफिक ऑपरेशंस अप्लाई किए जो जो उसके पास वैल्यूज़ थी, राइट? एंड नाउ वो अपना क्यूबिट बॉब को भेज देती है, ठीक है? अच्छा, अब वी वांट टू इंश्योर कि बॉब, अगर तो बॉब कोई अपने क्यूबिट्स के ऊपर, अब जो उसके पास दोनों आ गए हैं, राइट, कोई इंफॉर्मेशन, कोई गेट्स अप्लाई करेगा, और अगर उससे वो ए और बी की वैल्यूज़ रिकवर कर लेता है तो इसका मतलब है कि क्यूबिट आया, राइट, और उसने 2 क्लासिकल बिट्स की इंफॉर्मेशन रिकवर कर, राइट? मेक सेंस? सो दैट्स द बेसिकली आइडिया. सो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास यही 4 वो पॉसिबिलिटीज हैं. वी वांट टू रिकवर दीज, राइट? Yeah. ओके. इसमें ये नज़र आ रहा है, मैं उसमें कर लेता हूँ, एक सेकंड.
sends her half of the state to Bob, who now holds 2 qubits. Show that Bob can determine both A and B using Hadamard and C naught, followed by measurement in the computational basis. So पहले को उसको लेंगे हम, पहले को ले लेंगे फर्स्ट क्यूबिट को हम एज द कंट्रोल, अच्छा ये क्यों हमारे पास सेंस आई है कि हम फर्स्ट क्यूबिट को एज कंट्रोल लें? जस्ट अभी मैं सोच रहा था इसके बारे में, तो क्योंकि वो तो वही तो उसी के ऊपर तो गेट्स सारे जो एलिस से वो आया है वही हम उसको कंट्रोल लेंगे, क्योंकि इट इज एक्चुअली बीइंग कंट्रोल्ड बाय एलिस व्हेन शी अप्लाइज द ऑपरेशन, राइट? ओके, अब सी नॉट अप्लाई करते हैं हम इन सारी स्टेट्स के ऊपर। Hadamard first, no? No. No? Hadamard बाद में करें, और फिर हाँ फिर मेजरमेंट करें। Yes. Why? How do we know which one to apply first? Because okay, जब आप ये लगाओगे, let me go along और उससे आपको समझ आ जाएगी कि क्या हुआ है। C नॉट अगर करेंगे तो क्या आएगा इसके ऊपर, ये क्या बन जाएगा? So 5 प्लस के ऊपर जब C नॉट अप्लाई करता हूँ, 5 प्लस जिस के ऊपर C नॉट लगाया, तो what do I get? 1 over square root of 2 क्या होगा? 0 0 प्लस 1 0। अच्छा, अब ये क्या है? Can I write this as plus 0? Now do you get the idea why I was choosing this order? Because अब मैं प्लस के ऊपर हेडामार लगाऊंगा। हाँ, okay, yeah. अच्छा, आगे चलते हैं। 5 माइनस फिर कंट्रोल लगा C नॉट, 1 over square root of 2, 5 minus किधर है? This one? So 0 0 minus 1 0, right? The same thing. Minus 0. So I plus फिर C नॉट लगा, 1 over square root of 2, ये क्या था? 0 1 प्लस 1 0, राइट? तो पहले पे लगा तो ये 1 1 1 1, यस, plus 1 ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस दिस, और चौथी की क्या आ जाएगी? माइनस दिस। अब मैं इस पे क्या करूँगा? Hadamard क्रॉस आइडेंटिटी लगा दूंगा सब।
ये मुझे क्या दे देगा? प्लस 0 0. What about this? 1 0. फाइव प्लस से 0 1 आएगा. 0 1 होना चाहिए था ये. 0 1. माइनस के ऊपर हेड अमाउंट 1 नहीं देगा. माइनस के ऊपर हेड अमाउंट 1 नहीं देगा. The high one that does give you 1 0. Okay. 1 0 then. Hey, but hold on. Maybe the state is wrong. 5 minus ये थी ना? We were to 1 0 over there. Okay. No, we What about this one? C naught से आपको क्या मिलेगा? प्लस 1 के ऊपर क्या दे देगा ये? 0 1. 0 1. Okay, और इस पे क्या दे देगा? 1 1. ठीक है. सो आपको पता चल जाएगा कि किस में. इसको बाय द वे कहते हैं सुपर डेंस कोडिंग, जो कि नाम है भी है, मतलब ठीक है. और बहुत सिंपल सी चीज़. ठीक. सही है. बाकी अब कल हम लोग कंटिन्यू करें.